Assalamu alaikum and welcome back to the lecture series of Pakistan Studies. Today is the 10th lecture of that series, and in this lecture I'll be taking up the communalism in India. It's part 2. As we had already discussed that in India there were different communities, but mainly we will be talking about the two major communities, that is the Muslims and Hindus. And we took up these two communities because it's a requirement of our course and it's a requirement of our syllabus. That we will be talking about the differences and the political differences between the two, and sometimes when they came close together. So in communalism part 2, I will be taking three main topics. The first one is the Lucknow Pact, and the second one is the reforms of 1919, and the third one is the Khilafat Movement. In this lecture, I'll be covering these three topics. So coming to the Lucknow Pact of 1916, as in the previous lecture I had told you about the World War One in great detail. We discussed the World War One, its causes and implications, and the process, how the World War One, began in 1914 and then ended in 1918. And I had told you that World War One had great impact on India in many forms. So those impacts those had political impacts, those had human impact on India, as many people and many Jawans from India, they went to Europe and fought against the Germany. During those time period in 1916 in India, Lord Chelmsford, the Voices of India, began to think of the post-war reforms. As I told you earlier, that in 1909, after it was decided by the British and Indian government that each 10 years later there will be reforms introduced to India, and when reforms will be introduced in India, those reforms had to be introduced in 1919, 3 years later from 1916. So work had to begin from 1916, and Lord Chelmsford, the Viceroy of India, he thought about the reforms that are to be introduced. And similarly, during that time period in 1916, there were voices for Hindu-Muslim unity within India. There were voices because, as I told you earlier, that there were two major political parties. The first one was the Congress, and the other one was Muslim League. Congress was, however, an older party, while Muslim League was a recent party. It had only, life of 10 years. And in 10 years, obviously, Muslim League had not grown up. The Muslim League had not penetrated the common folk or the common people. On the other hand, Congress had that mandate, or that a strong presence in India, and it could influence the Indian government at that time. So there were voices from both the political parties that Muslim League and Congress, they both should talk together, and they should give a unified pattern, and they should give a uniform picture to the Indian government, the then British Indian government. So for this purpose, in December 1915, both the parties met and formed a joint committee to give recommendations. Obviously, it was the requirement. If reforms had to be introduced, the voices of India should be included in that. That was the demand of both the Congress and Muslim League. And for that purpose, both Congress and Muslim League, they sat together in 1915 and agreed in principle that a common a common agenda and a common point should be presented to the British government, that they may work upon it and may give a formula to the Indian people. And that was that meeting was then followed upon, and then in November 1916 the committee met again and formulated its recommendations. This was for the first time that Congress and Muslim League talked to each other face to face, and they sat together across a table, and their representatives talked to each other that on what points they could get united to give recommendations to the British Indian government. And in December 1916, both the parties met again and signed the Lucknow Pact. So it was a process of almost 1.5 years, or almost 2 years, almost 1 year, complete in December 1915. There was first meeting, and then December 1916 there was second meeting. So in a span of 1 year, both Congress and Muslim League, they kind of developed a joint statement, you may call it, a joint recommendation to the British Indian government. Coming to the next slide,
Let's see the key points of Lucknow Pact. What were the key points of Lucknow Pact at that time? So the key features, obviously when both the Congress and Muslim League met, they had to show their presence, and they had to, identify themselves as the representative parties of the both the communities. Muslim League argued to be the representative of Muslims solely, not at that time, well, often, but. It said that is Muslim League, so it is the party of Muslims of India, and as I had told you earlier, that 19 when when the Muslim League leaders met before in 1906 in Shamla deputation, when they met the Mountbatten, the first demand which they presented was the separate electorate. And I told you that what separate electorate means. Separate electorate means that the votes and the seats should be reserved for Muslims, that only a Muslim can vote for Muslims. This was specifically for the minorities, which was introduced in 1909, and obviously this was the main concern of the Muslims, because in India the population of Hindus was far greater, other communities was far greater than that of Muslims. So Muslims had this insecurity in their minds that if their representation was not secured, they won't get their rights. So the first thing which both Congress and Muslim League agreed in principle was that Congress agreed to the right of separate electorate. It was for the first and the last time that Congress agreed to the separate electorate, and it was a very hallmark achievement for Muslim League that it achieved in 1916, that Congress agreed to the separate electorate. So it means that Congress, the political party, the largest political party, agreed to the point that that they have no problem if Muslims want the reservation of seats and votes for themselves. The second achievement of Muslim League, or rather both political parties, in 1916 Lucknow Pact, was that Congress agreed that Muslims would have 1/3 representation in the Imperial Legislative Council. Muslims had this demand in their minds that 1/3 representation should be given to Muslims. And what is the significance of 1/3 representation? 1/3 is equivalent to 33% of the whole house. While there is proportional representation in a democracy, where if you have a population of 20%, you will get representation of 20%. If you have a population of 50%, you will get representation of 50%. So this is a proportional representation. The representation is in proportion to your population, your number of people. The population of India, the population of Muslims in India at that time was almost 25%. So if you apply the formula of proportional representation, that was Muslims would get 25% in the Imperial Legislative Council. And that had a problem. The problem was that Muslims could not stop the bills that were of very of prime importance, requiring 2/3 majority, because a 2/3 majority can only be Muslims can only play their role when they have the representation of 33%. So in order to stop, or in order to be influential in the Imperial Legislative Council, the Muslims had this in mind, that they should get 33% of representation in the Imperial Legislative Council, despite their population was just 25%. So this demand was also conceded by Congress at that time in 1916, and this was the hallmark achievement of Muslim League, by virtue of which it convinced Congress to accept this demand. And the third is also a very important point, and that is the system of weightage. A weightage formula was agreed upon, that Muslims would be given weightage in the provinces where they were in minority, and Hindus would be given weightage in those provinces where they were in minority. So this was a formula, a kind of formula, in which before making you understand about this concept of weightage, let me just give you a little
idea about the population of Muslims. In northern India, Muslims were in majority in Punjab, in Bengal, in NWFP, in Sindh, and in Balochistan. So these were the and eastern Bengal. These were the areas where Muslims were in majority. And in central India, that is UP, CP, Bihar, UP and CP, the United Provinces and the Central Provinces. In these areas, Muslims were in minorities, and the rest of India, Muslims were in minority. So that's the so this kind of disproportion of Muslims in majority in few provinces and minority in the other provinces has created a problem for Muslims, that their rights were under threat in the minority provinces. So they had demanded that constitutionally the rights of Muslims should be safeguarded, and that can only be done through giving constitutional protection to their rights that they should be given, and it can only be given in the way when their representation is increased. So Muslims agreed to this formula of weightage, that if their population is 13%, they should be given 30% representation in the UP and CP provinces. And however, in the Muslim majority provinces such as Punjab and Bengal, when they accepted this formula, they turned themselves into a minority. As Muslims were in majority, but under this formula of weightage, the Hindus and Sikhs, they got larger representation as compared to their in proportion to the population. That's why the two bigger provinces of Bengal and Punjab turned into a Muslim minority provinces. And that for the future constitution, both Muslims agreed to the constitution structure embodied in the Congress League scheme, which was under this point we will be looking at the constitutional structure that was suggested by both Congress and Muslim League to the British Indian government. And the first one was provinces should be given the maximum administrative autonomy. This word of provincial autonomy you might have listened so many times, and by provincial autonomy means Subai Khud Mukhtari, that each province should be given maximum autonomy, and by maximum autonomy means that the center should not interfere in the affairs of the provinces. And if they do not interfere in the affairs of provinces, it means that provinces should be given the rights. That right should be secured, guaranteed constitutionally. The second one is only 1/5 of the provincial and central legislative councils should be nominated. As I told you earlier that there were two type of councils. The first one was legislative, and the other one was executive, and that those two councils existed in both province and at the center. So it's half of the members of those councils were nominated and half of them were elected. So what Muslim League and Congress demanded, that 1/5, that is 20% of the of the whole house should be nominated and 80% should be elected. The third point is that not less than half of the members of central and provincial governments should be elected by the elected members of the respective legislative councils. So the members of the government, they were nominated by governors and governor general respectively. However, in 1916 through the Lucknow Pact, Congress and Muslim League demanded that in the central and provincial governments, the elected members should be elected by their legislative councils. And the last point is that central and provincial governments would be bound by the resolutions passed by their respective legislative councils unless they are vetoed by Governor General or the governors in council. ये बेसिकली कहता है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनके जो असम्बलियां हैं, उनकी जो रेजोल्यूशंस हैं, पहले वो रेजोल्यूशन पास होती थी तो उसका कोई बाउंड नहीं होता था हुकूमत के ऊपर कि उस रेजोल्यूशन के ऊपर अमल करे, लेकिन इसमें डिमांड की गई कि जो रेजोल्यूशंस पास होंगी
वो रेजोल्यूशंस गवर्नमेंट बाउंड होगी और उसको जो है वो गवर्नमेंट्स पे अमल करेगी, सिवाय इसके कि अगर गवर्नर जनरल या गवर्निंग काउंसिल जो है वो उसको रिजेक्ट करे. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वो ये है लास्ट पॉइंट, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड हैव नो पावर टू इंटरफेयर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डायरेक्शन ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स and the foreign and political relations of India, including the declaration of war and making of peace and entering into treaties. कि जो सेंट्रल मरकज़ी असम्बली है वो हुकूमत के अख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती फ़ौज के मामले में और फॉरेन अफेयर्स के मामले में. सो दिस वाज काइंड ऑफ द लखनऊ पैक्ट, the agreement between Muslim League and Congress regarding the constitutional structure of the country, and it was a kind of a unified formula that was presented to the British Indian government. So when you analyze the Lucknow Pact, there are two important things. The first one is due to weightage, Muslims lost majorities in Punjab and Bengal. मैंने आपको पहले भी बताया कि बंगाल और पंजाब जो थी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी, लेकिन चूंकि वेटेज वाला सिस्टम आया तो उस वेटेज का मतलब ये है कि जिस सूबे में जो लोग अकलियत या माइनॉरिटीज़ में हैं उनको आप ये हकूक़ दे कि उनकी आबादी से ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन हो. तो जिस वक्त ये फार्मूला आया गया तो पंजाब और बंगाल में तो हिंदू सिख माइनॉरिटी में थे, मुस्लिम मेजॉरिटी में थे. जब उनको उनकी आबादी के तनासब से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी थी तो ऑब्वियसली वो मुस्लिम माइनॉरिटी से मुस्लिम मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो गए. और दूसरा जो पॉइंट था वो 1/3 रिप्रेजेंटेशन का था कि मुसलमानों को 33% रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होनी चाहिए, कि जिसकी वजह से ये होगा कि कोई भी जो अहम कानून साजी है, इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है, वो उसको रोक सकें और उसमें जो है अपना इन्फ्लुएंस हासिल कर सकें. सो दिस वाज ऑल अबाउट द 1916 लखनऊ पैक्ट, दैट वाज दिस एग्रीमेंट. Moving ahead, Montague-Shamsone reforms of 1919. As I told you earlier that 10 सालों में जो था ब्रिटिश ने ये वादा किया था कि वो हर 10 साल बाद इंडिया में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराएगी. और इस रिफॉर्म इंट्रोडक्शन के सिलसिले में ये है कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इसका मकसद बेसिकली ये था कि जो अथॉरिटी है दैट शुड बी स्लोली एंड ग्रेजुअली हैंडेड ओवर टू द इंडियन पीपल एंड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स. उसका बेसिक मकसद यही था. बहुत से रिफॉर्म्स पहले भी किए गए थे, 1909 में रिफॉर्म्स हुए और उसके बाद 1919 में हुए. तो 1916 से जो है ये प्रोसेस चला आ रहा था कि जो है वो रिफॉर्म्स कैसे दिए जाएँ. So the first point is that British agreed to introduce reforms in India but was not inclined to give self-government. Rather than Lord Curzon introduced responsible government. अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंड बताने की कोशिश करूँ कि सेल्फ गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है. सेल्फ गवर्नमेंट से मुराद ये है खुद मुख्तार हुकूमत. खुद मुख्तार हुकूमत से ये मुराद है कि जिस इलाके में लोग रहते हैं वहाँ के लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करें और उन नुमाइंदों के इंतखाब के बाद वो नुमाइंदे हुकूमत बनाएं और उन लोगों की अपनी हुकूमत हो. सो इट मीन्स दैट सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स दैट द पीपल लिविंग in a specified area, they should have the right to rule their own selves, to rule themselves. उनके पास अपना हक है कि अपना वोट इस्तेमाल करें, खुद हुकूमत बनाए वगैरह वगैरह. However, चूंकि इंडिया उस वक्त एक कॉलोनी थी, it was not an independent country, that's why the British government was not ready to give the right to Indians to form their self government. तो इसलिए सेल्फ गवर्नमेंट की जगह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से मुराद ये है कि हुकूमत अंग्रेज़ों की होगी और उसमें हिंदुस्तानी भी शामिल होंगे, लेकिन वो किसी हद तक, ज़्यादा नहीं, नॉट एट ग्रेट स्केल बट ऑन अ माइन्यूट स्केल जो है वो कुछ हद तक आवाम को जवाबदेह हो और आवाम को रिस्पॉन्सिबल हो. So this was kind of a formula introduced by the British government at that time. So on August 20, 1970, Montague made announcement in the House of Commons. House of Commons कहते हैं जिस तरह से हमारी कौमी असम्बली है, ब्रिटिश की जो लोअर हाउस है जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ब्रिटिश के, उसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं. सो इन दैट हाउस ऑफ कॉमन Montague made a statement. अब वो स्टेटमेंट क्या है? The policy of His Majesty's government, with which the government of India are in full accord, is that of increasing association of Indians in every branch of administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire.
यानी जंग ख़त्म हुई थी 1918 में, तो जंग के ख़त्म होने के बाद हिंदुस्तान में रिफॉर्म्स लाने थे। तो उस रिफॉर्म्स के मुताबिक शमसून ने ये ऐलान किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो हिंदुस्तान में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दें। बाय दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स कि वहाँ की कुछ पावर्स जो हैं वो वहाँ की हिंदुस्तानियों के हक़ में हो, कुछ जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ में हो, लेकिन दैट गवर्नमेंट शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द people on a large scale, but on a minute scale it may be responsible. अच्छा, जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, वो कौन से चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है what were the main points of 1919 reforms. So the first point is that Secretary of State would control affairs relating to Government of India. मैंने आपको पहले ही बताया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुराद ये है कि ब्रिटिश हुकूमत के अंदर जो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर है उसकी कैबिनेट में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था। सो वो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडिया को संभालने की, वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के ऊपर होती थी और उसके नीचे पर गवर्नर जनरल या वाइसराय काम करता था इंडिया के अंदर। So the second point is that Imperial Legislative Council would be comprising of two chambers, the Council of State and the Central Legislative Assembly. यानी जिस तरह से हमारे दो हाउस है, एक कौमी असम्बली एक सेनेट है, इसी तरह से हिंदुस्तान में भी दो हाउसेज होंगे। द फर्स्ट वन वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी जो सूबों को रिप्रेजेंट करें, एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली जो आवाम को जो है वो रिप्रेजेंट करें। द थर्ड पॉइंट इज दैट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एम्पावर्ड टू इनैक्ट लॉज ऑन एनी मैटर फॉर होल ऑफ इंडिया, कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो उसके पास ये अख्तियार है कि वो पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून साजी करे, पूरे हिंदुस्तान के लिए लॉ बनाए। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गवर्नर जनरल वाज गिवन पावर्स टू समन, प्रोरोग, डिसॉल्व द चैम्बर्स एंड प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। गवर्नर जनरल का ये अख्तियार था कि वो इसके इजलास को बुलाए, उसको प्रोरोग करे, उसको डिसॉल्व करे और उसको जो है वो ऑर्डिनेंसेस जो है वो प्रोमलगेट करे। सो ही वाज गिवन द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल वाज in authority that he could anytime dissolve the central legislative assembly जब उसके अख्तियार में हो। The next one is the number of Indians in Viceroy's executive council would be 3 out of 8 members. अच्छा, वाइसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी जो उसकी कैबिनेट है उसमें 8 बंदे होते थे, 8 लोग होते थे। उसमें से ये 8 के 8 पहले सारे उसमें से 2 जो थे वो इंडियंस होते थे, बाकी 6 जो थे वो अंग्रेज होते थे। सो अंडर दीज रिफॉर्म्स the number of Indian members of the Viceroy's executive council was increased to 3, यानी 3 हिंदुस्तानी होंगे, बाकी 5 जो हैं वो अंग्रेज होंगे। And the other point is that the establishment of bicameral provincial legislature, यानी जो सूबाई वो होंगे असम्बलियाँ होंगी वो भी बाइकैमरल होंगी, यानी उसके भी 2 हाउसेस होंगे। And one important thing that was introduced through the reforms of 1919 was the system of diarchy. Diarchy कहते हैं 2 तरह के लेवल्स को, और उसमें if you talk about a गवर्नमेंट के पास होती हैं अख्तियारात, गवर्नमेंट के पास होते हैं पावर्स, तो वो पावर को इस्तेमाल करता है। जैसे वो कौन से पावर्स हैं, एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी बनाना, हेल्थ के ऊपर बनाना, डिफेंस के ऊपर बनाना, करेंसी, रोड्स, सफाई, पुलिस, मिलिट्री। सो दीज आर ऑल पावर्स दैट एक्सरसाइज बाय गवर्नमेंट। और इसमें फिर डिवीजन होती है, कुछ जो है वो सेंटर के पास होते हैं, कुछ जो है वो सूबों के पास होते हैं। तो जो सूबों के पास अख्तियारात होते हैं उसको प्रोविंशियल पावर्स कहते हैं, और जो सेंटर के पास अख्तियारात होते हैं उनको सेंट्रल पावर्स कहते हैं। तो हिंदुस्तान में इन 1919 थ्रू द रिफॉर्म्स डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, और ये जो डायरकी वाला सिस्टम है ये सूबों में इंट्रोड्यूस करवाया गया इन 1919। अब डायरकी से क्या मुराद है, उससे मुराद ये है कि 2 तरह के पावर्स हैं, एक को कहते हैं रिजर्व पावर्स, एक को कहते हैं ट्रांसफर्ड पावर्स, या रिजर्व सब्जेक्ट्स या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब रिजर्व सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस, लॉ, ऑर्डर एंड आर्मी, पुलिस एट्सेट्रा जो सूबे के बारे में थी
ये सारा जो रिज़र्व था ये सेंटर के पास थी, यानी वो अख्तियारात जो सूबे के अंदर, यानी सूबे के अंदर भी जो है कुछ पावर्स वो सेंटर के पास होते थे और कुछ ट्रांसफर्ड होते थे, ये जो सूबे को दे दिए जाते थे। एंड अमंग दोज ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेट्रा। कि जो हेल्थ था, एजुकेशन था, पब्लिक सेल्फ गवर्नमेंट था, ये अख्तियारात जो थे वो सूबों के पास होते थे, इनको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहा जाता था। एंड देयर वुड बी henceforth द डायरेक्ट इलेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल फ्रेंचाइज, के इलेक्शन जो थे वो डायरेक्ट होने थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस ख़त्म कर दिए गए। और लेकिन जो फ्रेंचाइज था, फ्रेंचाइज से मुराद ये है कि कौन वोट डाल सकता है। अब पाकिस्तान में इफ़ यू लुक एट द थिंग्स, इट इज़ कॉल्ड एज एडल्ट फ्रेंचाइज। जो शख्स 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है वो वोट डाल सकता है, चाहे वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, जागीरदार है, गरीब है, औरत है, मर्द है, जो भी है। 18 साल से जिसकी एज ज़्यादा हो गई, ही और शी कैन कास्ट अ वोट। लेकिन हिंदुस्तान में उस वक्त जो फ्रेंचाइज था, यानी जो लोग वोट डाल, दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड। एक तो 21 ईयर्स एज थी, 21 ईयर्स के साथ साथ जो अमीर भी थे, जिन्होंने बीए ग्रेजुएशन की हुई थी और जिन्होंने के पास बहुत पैसा था, तो वो लोग वो थे कॉमन लोग। एडल्ट फ्रेंचाइज एग्जिस्ट नहीं करता था। And a council of princes was also set up with 108 members to allow princes to debate matters of importance। यानी जो रियासतें थीं, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके काउंसिल एक 108 मेंबर्स का काउंसिल बनाया गया था, जो अपने प्रिंसली स्टेट्स के हवाले से इम्पोर्टेंट डिबेट्स किया करते थे। So this was all about the Montague Chumps the reforms of 1919, and these reforms, it was for the first time in India that a diarchy system was given to it, and the executive council was enlarged, and the legislative councils were enlarged, and the separate electorate and British system was introduced in India. So मोंटेग ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म्स इस हवाले से सिग्निफिकेंस हैं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रांसफ़र ऑफ पावर की तरफ जो है वो इशारा करती है, कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदुस्तानियों को अख्तियारात ट्रांसफ़र कर रहे हैं वक्त के हिसाब से। मूविंग अहेड, एंड द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज़ खिलाफत मूवमेंट 1924। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट पे जाने से पहले लेट मी जस्ट रिकॉल द लेक्चर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। एंड एज आई टोल्ड यू, वर्ल्ड वॉर वन में जो एक तरफ जर्मनी, इटली, ऑटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर थी, दूसरे साइड पे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, एंड इन 1917 बाद में यूएस ने भी ज्वाइन किया। सो एंड रिजल्ट वर्ल्ड वॉर वन का ये हुआ कि जर्मनी हार गई। एंड व्हेन जर्मनी लॉस्ट द वार अलॉन्ग विथ हिज एलाइज, मैंने आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताया कि कॉन्सिक्वेंसेस में बहुत से करोड़ों की तादाद में लोग, 3 करोड़ के तादाद में लोग दे डाइड। एंड देन जो है ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर वो टूट का शिकार हो गई, जर्मनी के ऊपर जुर्माने लग गए। रशिया जो है वो में रेवोल्यूशन आया, और आयरलैंड जो है वो आज़ाद हुआ ब्रिटेन से। फ्रांस जो है वो इकोनॉमिकली वीक हो गया। एंड एट द सेम टाइम जो ऑटोमन एम्पायर था, जो सल्तनत उस्मानिया था, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। सल्तनत उस्मानिया में जो अफ्रीका का जो एरिया था वो सारा उससे निकल गया, जो यूरोप वाला सारा एरिया था वो उससे निकल गया। सो जो सिर्फ टर्की वाला एरिया रह गया, that was the integral part of Turkey, and Turkey lost the war at that time, or it was occupied by Great Britain। और फिर मैंने फ़लस्तीन का भी बताया कि फ़लस्तीन भी जो था वो ग्रेट ब्रिटेन के हाथ में चला गया। When the war ended in 1918, तो ऑब्वियसली उस वॉर में इंडियन भी थे और इंडियन मुस्लिम्स भी थे। So the Muslims had concerns about the Ottoman Empire and the Muslim sacred places at that time. So what they had demanded कि जंग के ख़त्म होने के बाद जो है मुसलमानों के मुक़द्दस एरियाज़ को, सल्तनत को और खिलाफत को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। So before going into the British policies towards the Caliphate of Muslims or the Caliphate of Turkey, let me just give a brief history of खिलाफत की। खिलाफत की तारीख़ में आपको थोड़ी सी बताऊँ कि खिलाफत इवॉल्व कहाँ से हुई और कहाँ से चलती चलती यहाँ तक पहुँची।
जिस वक्त प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, when he departs from this world, जो फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम है वो अबू बकर सिद्दीक होते हैं। और कैलिफ अबू बकर के हाथ पर जो है वो बाकी जो मुस्लिम्स हैं वो बैत करते हैं, वो उसको कैलिफ अबू बकर को अपना जो है वो खलीफा मानना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से खिलाफत की बुनियाद पड़ी। और पहले जो 4 खुलफा हैं उनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, यानी दे आर द राइटली गाइडेड कैलिफेट की वो। और उसको पहले और कैलिफ अली के बाद, कैलिफ अली के शहादत के बाद जो है वो फिर बनु उमैया में अमीर मुआविया की फैमिली में जो है ये खिलाफत चली जाती है, और ये बनु उमैया की फैमिली बन जाती है, फैमिली वो बन जाती है। और बनु उमैया में 744 तक जो है वो खिलाफत चलती है। और उसके बाद बनु अब्बास आते हैं और एक बगावत होती है और इनकलाब आता है। यू नो दे जस्ट ओवरथ्रो दी उमैयद एंड दे इस्टेब्लिश दी बनु अब्बास कैलिफेट। और ये 744 से लेकर 1258 तक जो है वो बगदाद के अंदर ये खिलाफत बनु अब्बास की चलती है। और 1258 में हलाकू खान आकर बनु अब्बास की खिलाफत को तख्त तराज कर देता है। और उसके बाद खिलाफत जो है वो डिवाइड हो जाती है, एक फातिमी खिलाफत बनती है जो ईरान में अहल तशी की होती है। और उसके बाद जो है हिंदुस्तान में जो है वो मुस्लिम गवर्नमेंट कायम होती है। सो दिस यूनिटी दिस centrality of power disintegrates ultimately in 1300 जो है वो टर्की के अंदर जो है वो फिर जो उस्मानिया फैमिली है, द फैमिली ऑफ उस्मान, वो अपनी हुकूमत बनाती हैं। इट्स वेरी फेमस इन पाकिस्तान दीज डेज। आपने एतुल ड्रामा भी देखा होगा और मेरा सुल्तान ड्रामा भी देखा होगा। तो फिर इसी 1300 से लेकर 1924 तक, यानी दैट्स ऑलमोस्ट 600 ईयर्स, तो ये टर्की के अंदर जो है वो मुसलमानों की खिलाफत कायम हो जाती है। और जो उसका सबसे बड़ा खलीफा होता है दैट्स दी सुलेमान दी मैग्निफिसेंट, जो सुल्तान सुलेमान के ऊपर भी बनाई गई है ड्रामा। तो ये खिलाफत मुसलमानों की एक वाहिद और यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है वो जो अंग्रेज़ों के आने के बाद मुस्लिम गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के लोग वो टर्की को एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। एंड दे लुक टुवर्ड्स द कैलिफेट ऑफ टर्की एट दैट टाइम एंड दे रिवर हिम एंड दे रिवर दैट यू नो द सिस्टम ऑफ खिलाफत। उनके जहन में एक आइडियल मुस्लिम गवर्नमेंट अगर कोई है तो वो खिलाफत ही होती है। सो जिस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 होती है और ऑटोमन एम्पायर हार जाता है, तो मुस्लिम्स का एक कंसर्न होता है कि हमारी एक ही खिलाफत है, दैट इज़ द ऑटोमन एम्पायर, एंड इफ इट इज़ डिसइंटीग्रेटेड देन मुस्लिम्स विल बी इन ग्रेट ट्रबल। तो इसी के साथ साथ जिस वक्त पोस्ट वॉर पॉलिसी ब्रिटिश अपनाता है, उसमें एक पॉलिसी ये होती है कि वो जर्मनी के ऊपर जुर्माने लगा देता है। तो साथ ही साथ वो कहता है कि जो ऑटोमन एम्पायर है उसको हम टुकड़े करके मुख्तलिफ हिस्से करके अपनी एलाइज में तकसीम कर देंगे। एंड अंडर द ट्रीटी ऑफ सेवरेज इन 1920 जो है वो फिर ये पॉलिसी ब्रिटिश बनाता है कि द ऑटोमन एम्पायर शुड बी डिवाइडेड अमंग द विक्टर्स ऑफ दैट टाइम। सो जिस वक्त तो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ वाज़े होती हैं हिंदुस्तानियों के ऊपर, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रिएक्शन आता है। एंड इन दैट रिएक्शन द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिमांड्स फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, the loyal George, who was the prime minister at that time, they demand that that the sanctity of the Muslim places, worship places, they should not be humiliated, and the Turkey and the Caliphate Empire should be restored. However, that does not उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल आता। सो इन मार्च 1919 खिलाफत कमेटी इज़ फॉर्म्ड अंडर सेठ जान मोहम्मद चोटानी। और इस खिलाफत कमेटी का काम ये होता है कि वो जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर खिलाफत के इशू के ऊपर जो है वो मुसलमानों को मोबिलाइज़ करे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे शुड प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट द सैंक्टिटी ऑफ खिलाफत शुड बी रिस्टोर्ड एंड दे शुड बी नो थ्रेट टू द होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स इन दैट टाइम। इसी ज़िम्मन में इन दिसंबर 1919 खिलाफत डेलीगेशन इज सेंट अंडर मौलाना शौकत अली, और जब मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर अली, दीज टू
अली ब्रदरान, दे आर कॉल्ड एज अली ब्रदर्स, एंड ये जेल में होते हैं, तो जेल से जब निकल आते हैं तो पूरी खिलाफत मूवमेंट को जो है ये लोग लीड करना शुरू कर देते हैं। एंड इन दिसंबर 1919 खिलाफत डेलीगेशन कहते हैं वफ्द को, सो खिलाफत डेलीगेशन मूव्स फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन, और वहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज से मुलाकात करता है और उसके सामने डिमांड्स रखते हैं। द फर्स्ट डिमांड इज दैट Sultan of Turkey as a caliph of Muslims should be kept as a sovereign ruler of an independent state comprising Constantinople, Thrace, Anatolia, and Armenia. Okay, the Sultan of Turkey should be restored, and the independence of Thrace, Anatolia, and Armenia, and Constantinople, it should not be violated, and Turkey should be kept intact. And the second point was the areas of Hijaz, Syria, Palestine, and Iraq, which had the holy places of Islam, should be protected from the rule of non-Muslims. So these Hijaz, Makkah, Medina, Syria, Palestine, and Iraq, these areas were under the Ottoman Empire. After World War I, these areas just got liberated. The Sharif of Makkah, he revolted against the Ottoman Empire, and अरब नेशनलिज्म के तहत जो है वो सऊदी अरबिया एट दैट टाइम द हिजाज जो है वो आज़ाद हो जाता है और अपना अलग से मुल्क बनाता है। सीरिया, पैलेस्टाइन, इराक इन एरियाज पर जो है ब्रिटिश की सल्तनत तसल्लुत कायम हो जाता है। सो द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर दैट द होली प्लेसेस ऑफ इस्लाम इन हिजाज, इराक एंड सीरिया, they should be protected, and the sanctity should not be violated, and there should be rule of Muslims, not non-Muslims. However, these demands are not met. इन डिमांड्स को जो है वो बहुत ही तज़हीक के साथ जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। बड़ा फेमस स्टेटमेंट है लॉर्ड जॉर्ज का कि टर्की शुड गेट जस्टिस, तुर्की के साथ इंसाफ होगा और तुर्की के साथ वही इंसाफ होगा जो बाकी ममालिक के साथ होगा। सो ऑब्वियसली इफ़ यू लुक एट द कॉस्ट ऑफ वॉर, जो मैंने वर्ल्ड वॉर वन डिस्कस की, इतनी बड़ी जंग ब्रिटेन ने लड़ी और इतना ह्यूमन कॉस्ट वॉर हुआ, सो ब्रिटेन वाज not going to accept the demands of Muslims of India at that time. Obviously it was a colonial power, तो एक colonial power जो है वो अपने colonized लोगों की बात कहाँ सुनता है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा ये कि वो बहुत सी ख़तरनाक द ग्रेट वॉर जिसको कहते हैं, वो इतनी जंग लड़ी गई है जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, अरबों खरबों के हिसाब से जो है वो नुकसान हुआ। तो ऑब्वियसली दे हैड टू drive that amount from the losers at that time. So जिस वक्त ये डिमांड्स जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द इंडियंस दे decided to start the non-cooperation movement. When non-cooperation movement was launched, an interesting thing this happens in India, and in India Congress, especially Gandhi, associates with the Khilafat movement. तो खिलाफत मूवमेंट और कांग्रेस जो है वो इत्तेहाद कर लेते हैं आपस में, एंड खिलाफत मूवमेंट की जो बागडोर है वो गांधी के हाथ में दे दी जाती है। सो बिफोर गोइंग टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेट मी जस्ट गिव यू सम आइडिया अबाउट गांधी कि गांधी का फ़लसफ़ा क्या था। गांधी अफ्रीका से जब आया था तो वो अफ्रीका में एक नॉन वायलेंट मूवमेंट जिसको अहिंसा कहते हैं या सत्याग्रह कहते हैं, वो गांधी का फ़लसफ़ा था कि आप तहरीक चलाएं, आप एहतजाज करें, आप रेजिस्ट करें ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बट दैट रेजिस्टेंस शुड बी नॉन वायलेंट। उसमें वायलेंस का आंसर नहीं होना चाहिए और उसमें जंग व जदल नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी नॉन वायलेंट एंड पीसफुल रेजिस्टेंस थ्रू स्ट्राइक्स, थ्रू स्लोगन्स एंड थ्रू स्लोगनियरिंग। आप जो है वो रेजिस्ट करें ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एंड देयर शुड बी नो वायलेंस। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलेगी तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी जो थी, इट वाज द एक्सटेंशन ऑफ गांधी फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। तो इसमें जो है वो कुछ डिमांड्स की गई लोगों से कि नंबर वन, दिस एसोसिएशन फ्रॉम ऑल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। कांग्रेस के जो लोग हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हैं, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं, दे शुड रिजाइन फ्रॉम दोज their posts. Number two, boycott of courts. वुकला से, जजेस से कहा गया कि आप जो हैं वो you should resign or boycott the courts, ताकि ताले लग जाएं अदालतों को, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बन जाए, गवर्नमेंट जो है वो हिंदुस्तानियों के डिमांड्स को एक्सेप्ट करना लग जाए। The third one is boycott of all such government schools
in colleges which received government grants. So जितने भी सरकारी, जिनको आम अल्फाज हम सरकारी स्कूल कहते हैं या सरकारी कॉलेजेस कहते हैं, उन सब से बाइकआउट किया जाए ताकि गवर्नमेंट जो है वो प्रेशराइज हो जाए. एंड रिलिंक्विशिंग ऑफ ऑल हॉनरी ऑफिसेज एंड मजिस्ट्रेसी, जितने भी हॉनरी टाइटल्स एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह, खान बहादुर वाले, सर वाले टाइटल्स, इस तरह के जितने भी टाइटल्स कन्फर किए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, गांधी demanded that they should be returned, and Muslims and Hindus and all communities should equally non-cooperate with the government. And last one is resigning the government jobs. That in non-cooperation movement, if you are not going to cooperate with the government, then you should resign from your government job, which you have, earned it. So this was the, non-cooperation movement that was launched by Gandhi. Along with non-cooperation movement, moving ahead to the next slide, we can see the Hindu-Muslim unity at that time. हिंदू-मुस्लिम इत्तेहाद उस वक़्त बहुत उरूज पर था, और मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, और ये तहरीक में जो है द ओनली कल्प्रिट और द ओनली एनिमी वाज द कॉलोनियल एम्पायर, दैट इज़ द ब्रिटिश. एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, द नेक्स्ट इज़ स्वराज, और वो ये है कि फॉर मुस्लिम्स इट वाज अ मूवमेंट जो उन्होंने अपने जो होली प्लेसेस हैं, जो मुक़द्दस जगह हैं, उनको सिक्योर करने के लिए चलाई और खिलाफत को बचाने के लिए चलाई. लेकिन जब गांधी और कांग्रेस ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया तो उसमें गांधी ने स्लोगन स्वराज का उठाया, और स्वराज कहते हैं आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी. तो स्वराज जो है वो एक खिलाफत मूवमेंट का फिर एक टाइटल बन गया, कि जहाँ उन्होंने कहा कि हम चूँकि इत्तेहाद में हैं हिंदू और मुस्लिम्स, इसलिए हमें जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर लेनी चाहिए. इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो थोड़ी बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, वो शुरू हुई हिजरत मूवमेंट, तहरीक हिजरत. मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर डालने की खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अब्दुल बारी, इन्होंने एक फ़तवा जारी किया, और फ़तवा था उसका द मेन पॉइंट ऑफ दैट फ़तवा वाज कि दे डिक्लेयर्ड इंडिया दारुल हर्ब. दारुल हर्ब कहते हैं लैंड ऑफ वॉर, कि यानी इस ज़मीन में पीस नहीं है, तो इसलिए मुस्लिम्स शुड माइग्रेट टू नेबरिंग स्टेट दैट एट दैट टाइम वाज अफ़गानिस्तान. अब अफ़गानिस्तान जो है हिजरत करें, ये हिंदुस्तान जो है दारुल हर्ब है, यहाँ पर इस्लाम सिक्योर नहीं है. सो अंडर दीज फतवाज हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो थे वो उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया अफ़गानिस्तान की तरफ. और जो मेन फ्लक्स था वो NWFP में था, और NWFP में जो लोग थे फ्रॉम सेंट्रल इंडिया ऑनवर्ड्स, दे वर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते थे, एंड देन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट दे वुड गो टू अफगानिस्तान, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे जस्ट sold their land, their houses and their properties, their jobs, everything, and they left India to migrate to Afghanistan in order to just non-cooperate with the British government. उसका नतीजा ये हुआ कि अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि बहुत से हज़ारों लोग जो थे वो एंटर होना चाहते थे अफ़गानिस्तान. तो अफ़गानिस्तान ने जो है उस प्रेशर को डील करने की वजह से जो था वो इट इज़ आर्ग्यूड दैट अफ़गान डिनाइड एंट्री टू द इंडियन पीपल एट दैट टाइम. And in some books we see that Afghanistan gave access to few people, कुछ लोगों को आने दिया और वो वहीं पर सेटल हुए, लेकिन वो लोग जो थे वहीं पर सेटल नहीं होना चाहते थे. they wanted to move ahead, that's why अफ़गानिस्तान ने जो है वो उनके लिए रास्ता वापस खोल दिया. लेकिन बहरहाल रिजल्ट नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोगों को ये हिजरत मूवमेंट फेल हो गई, and all of them they just returned. And when they returned, obviously they had sold their properties, they did not have any single penny in their pockets, that's why उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. And the next point is मलाबार revolt. इसी खिलाफत मूवमेंट के दौरान जो मलाबार के लोग थे वो किसान थे, और उन्होंने इसको मोपला भी कहते हैं, मोपला बगावत भी कहते हैं, वहाँ पर लोगों ने जो है वो बगावत कर दी है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और उस बगावत में बहुत से अंग्रेज़ मारे गए, और गवर्नमेंट ने फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स यूज़ करने के बाद उस बगावत को बुरी तरह से कुचल दिया, और कुचलने के बाद जो थे बहुत से लोगों को ट्रेनों में बंद करके ले गया, और ट्रेन जिस वक्त दरवाजे खोले तो बहुत से लोग मर चुके थे.
This was 1921 and 1922. This was the peak of Khilafat movement and non-cooperation movement at that time. However, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक इलाका है, वहाँ पर एक इंसिडेंट होता है। वहाँ पे एक थाना है और एहतजाज हो रहा है, और थाने में तकरीबन 20 से 22 पुलिस वाले हैं, और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो आकर थाने का घेराव करते हैं, और थाने को घेराव करने के बाद थाने को जला देते हैं। व्हेन दे जस्ट बर्न डाउन द होल पुलिस स्टेशन। इस पे जो है वो गांधी को जब इस बात का पता लग जाता है, तो गांधी ने कहा था कि मेरी जो पॉलिसी है, मेरा जो फ़लसफ़ा है वो नॉन वायलेंस का है, लेकिन चूंकि अब वायलेंस हो गया तो इसलिए मैं इस तहरीक का हिस्सा नहीं हूँ, और इसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। बाय दिस टाइम पीरियड टिल 1922 सारी के सारी जो लीडरशिप थी वो खिलाफत मूवमेंट की, वो जेल में थी। तो इसलिए गांधी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के ख़त्म करने के बाद जो था वो देयर वाज नॉट सिंगल लीडर लेफ्ट जो इस मूवमेंट को चलाता। एंड एट द सेम टाइम 1924 जो था वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो था वो उसने खिलाफत ख़त्म कर दी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेट मी जस्ट गिव यू अ डिटेल अबाउट द एंड ऑफ खिलाफत इन 1924। जिस वक्त 1920s में से ट्रीटी ऑफ सेवरेज हुई और टर्की को तोड़ने का एक प्लान बना, तो ग्रीस ने, जो ग्रीक जिसको हम कहते हैं, उन्होंने हमला कर दिया टर्की के ऊपर। एंड टर्की यूनान ट्राइड टू कैप्चर the areas of Turkey at that time. So ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो फोर्सेस को भेजने की कोशिश की और वहाँ टर्की को सबड्यू करने की कोशिश की। तो उसमें एक फ़ौजी था, उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। हिज नेम वाज जस्ट मुस्तफ़ा कमाल। एंड मुस्तफ़ा कमाल वेंट टू टर्की, और उस बगावत को कुचलने की बजाय ही साइडेड विद द टर्किश पीपल, और उनका साथ दिया, और तकरीबन साल 2 ये जंग चलती रही, और मुस्तफ़ा टर्की बिकेम विक्टोरियस, और ग्रीस को जो है वो हराने में नाकाम हुआ। इस तरह से टर्की जो है वो टूटने से बच गया। और व्हेन ही बिकेम द लीडर ऑफ टर्की एट दैट टाइम, उसने देखा कि खिलाफत एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो चुका है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ गया। सो ही एबॉलिश्ड खिलाफत एट दैट टाइम। उन्होंने खिलाफत को ख़त्म करके एक सेकुलर टर्की की बुनियाद रखी, जो कि टर्किश कौम पर मुश्तमिल थी, और उसने जो क्लेम्स थे इराक़ और पैलेस्टाइन और बाकी, उसकी क्लेम को ख़त्म किया कि वो टर्की का हिस्सा नहीं है, ऑटोमन एम्पायर का नहीं है। और जो सल्तनत उस्मानिया की जो बादशाह थे वो टर्की से निकल कर एग्ज़ाइल में चले गए, और इस तरह से 1924 में टर्की में सेकुलर रियासत की बुनियाद पड़ी। और जिस वक्त टर्की में सेकुलर रियासत की बुनियाद पड़ी, तो हिंदुस्तान में फिर खिलाफत के लिए मूवमेंट चलाने की का कोई फ़ायदा रहा नहीं। So that's why in 1924 the Khilafat movement ended itself. This was a great movement which began immediately after 1919, after the World War I, and it lasted almost for 3 to 4 years in India. However, it failed. जब ये फेल हुआ तो कुछ सवालात जो है वो जन्म लिए, और उसमें से सबसे पहला सवाल ये था कि क्या हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं। बिकॉज मैनी मुस्लिम्स थॉट कि गांधी ने जिस तरह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को ख़त्म किया, दे थॉट इट ऑफ इज़ ए बिट्रेयल, एक धोखा कंसिडर किया बहुत से मुसलमानों ने। एंड एट द सेम टाइम गांधी का जो फ़लसफ़ा था नॉन वायलेंस का, उसके ऊपर क्वेश्चन आया कि क्या नॉन वायलेंस एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, क्या ये ख़याली दुनिया का फ़लसफ़ा है या फिर ये वाकई एग्जिस्ट कर सकता है। So these were the questions raised which ultimately जाके बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये जो दरार बढ़ती गई मुसलमानों और हिंदुओं के बीच, है, अल्टीमेटली हिंदुस्तान जो है वो टूट गया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वो तकसीम हो गया। So coming to the effects of Khilafat movement, the effects were first let me just give you इस खिलाफत मूवमेंट के नाकाम होने से ये हुआ कि हिंदुस्तान में एक ओवरऑल सियासी शऊर आया,
और यही टाइम पीरियड है 20, 21, 22, 23 एंड देन ऑनवर्ड्स टिल 1930. इन सारे टाइम पीरियड में जो है पॉलिटिकल सियासी जमातें छोटी छोटी बननी शुरू हो जाती हैं, जिसमें जमात हिंद भी बन जाती है, जिसमें अंजुमन खुदा में काबा भी बन जाती है, एंड अंजुमन इस्लाहुल अफागना भी बन जाती है. इसी तरह से बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो भी एट दैट टाइम came to the surface. So this was a time period of political mobilization at that time in India. तो खिलाफत मूवमेंट का ऑब्वियसली एक ओवरऑल इंडिया के प्रति इफेक्ट ये हुआ कि एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ गई. जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो ये थे कि उन्हें बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग जेलों में गए, बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीनें खो दी, एंड बहुत से लोगों का जो है आपस में जो कम्युनल डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. So this was all about the three topics which I discussed. The first one was Lucknow Pact, and then the reforms of 1919, and then Khilafat Movement. From Khilafat Movement, we will move ahead in the next lecture. This is the time period 1924, and from 1924, then we will move ahead to the Simon Commission in the next lecture. So आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह मिलते हैं with next lecture. Allah Hafiz.